Well, this is 3 years, 3 years of our work. This is 1 year of shooting, and this is every day of giving everything that we have from our head and our heart to every little frame in this film to give you an experience that will stay with you, hopefully. This is a thriller. We can't talk so much about the film because we will reveal the plot of our film. I hope everybody will be respectful of that when you ask your questions and when you see the film. It's out very soon, exactly 2 weeks from now, 31st of Jan. This is the most complex character I've played. Having said that, I've played a few. But if there was any character that challenged me yet again to ask myself if I am capable of doing this, मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं, तो वो देवा है और वो रोशन एंड्रूज हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर क्रिएट किया और मुझे ऑफर किया और 1 साल हमने इस कैरेक्टर को साथ में डेवलप किया और फिर 1 साल उसको शूट किया. I want to thank everybody who's been a part of this film. Could not have made it without any of you all. और इस फिल्म में मैंने जो भी किया है, that is only because of Roshan. So, rest is up to you. So just one last thing. We'll do a quick picture and then of course we'll take the questions. लेकिन उससे पहले, talk to us about that intensity because anyone and everyone who's seen the teaser, या फिर चाहे वो गाना भी, usually we see a song and we know you're a brilliant dancer. लेकिन how do you get that intensity? Talk to us about that. क्या preparation चल रही थी? What was going on यहाँ पे? Yes. Actually, as an actor, आप हमेशा वेट करते हो कि आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कैसे मौका मिलेगा. ऐसा आसान नहीं होता है. मैं तो जाके कुछ भी नहीं कर सकता. जो फिल्म की कहानी है, जो कैरेक्टर है, जो वर्ल्ड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं वो ही कर सकता हूँ. और उससे ज़्यादा करूँगा तो ख़राब कर दूंगा. होपफुली उससे कम तो नहीं करूँगा. ऐसा नहीं है मेरा नेचर. लेकिन इस फिल्म ने मुझे फिर से बहुत वक्त बाद ऐसा मौका दिया कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को पुश कर पाऊँ. लेकिन there is also a lot of presence and aura of this character. So there is also an overwhelming personality जो देवा की है, which gives him that charisma and that star quality. So it needed to be a combination of both those elements. And आप फिल्म देखो यार, मतलब बोलने का क्या फायदा है. हम लोगों ने अपना काम कर दिया है. आप लोग देखो. Tell us what you feel. We've given it everything we have. But I have to say he's done it outstandingly well. When I watched the trailer, I called him and I spoke to him and I was like, how have you done it? Like, I can literally count the veins on your forehead and your face. Like, how? And even the first half, where he's like giving his lines I thought it was dubbed and he's like, no, that's on the scene. But it was so eerie and like I think you're definitely going to see a new Shahid because I feel like you've seen him do the other characters that he's done in his other films, but this is so restrained and intense and it's just amazing. It's because, Pooja, I am Mafia. Okay. So Shahid, my question is for you कि आपने कई एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया है, डांस सीक्वेंसेस किया है, डांस म्यूजिक किया है, तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिसके साथ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डांसिंग? ये बैठी हैं मेरे साथ पूजा हेगड़े. इनके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे डांस करके. बहुत मजा आया. हमने कट के बाद ये वाला स्टेप भी किया. पिछले दावत पूजा. Yeah. So she loves dancing and so do I. So we had a lot of fun on the sets of Masar Masha. Okay, thank you. I've always been attracted to this investigative journalist, that kind of a character. But I think the brief, in films like Spotlight and these kind of films, when I watched them, I just thought, I love the intensity and I like the urge to know and find out the truth. And sometimes, with people like that, they tend to be blinded by everything else except for finding this out. But I think the brief that Roshan sir and I, when we first met, we thought we'd meet for 5 minutes and then we went on talking about our love for films and David Fincher and all these kind of films. But I think the one brief Roshan sir gave me was, I want to see Diya and I don't want to see Pooja. And that was something that I strived to achieve. I wanted her to be authentically herself, be strong but not rude. And she's at the same time, she's not afraid of speaking her mind. So when you watch the film, you will understand and you will kind of know what I'm talking about. But she's at the same time got a little softness. I don't know if that answers the question.
So I think that's what I strive for, just being authentically herself. And I think she's pretty much the middle class girl of today who's like, this is what we see in women today. And I think that's what I hope, Roshan, so I've done justice to Purji or Dia, and I have followed your briefs. What inspired you to produce Deva, and how did casting process go? Well, I think the story is what inspired me most. So from the time that I met Roshan, it's a subject that we've been discussing from the very first time that we met, and the story is incredible, and that inspired me. And then secondly, watching his filmography, which is so incredible. He's such an iconic filmmaker from Malayalam cinema. The films that he's made. So the confidence that he would, that one is the story, then two is the ability of a director to deliver on that story. His filmography inspired that confidence completely. And so that's how the process began. And then when we went to Shahid, and he felt exactly the same way, that's how the whole project came together. So, but it started with the story. My question for you is, since the process of filming Deva was for 3 years, in the last 3 years there are a lot of thriller and action films that are coming from both sides, north and south. Some have performed exceptionally well, but some did not. So when you were making the film, did that that environment was affecting you while you were making, or was any decision was taken while filming on that fact? I always believe in myself. I believe the instinct of mine. So action film, whether the other films run or not, and that's not bother. For me, Deva, the actions in this film, all the action I wrote myself. So the actions should be the part of the screenplay. It's not for the sake of the action. We've not added any action sequence. So all the action sequence is a part of the screenplay story structure. So I don't worry about other films and all that. For me, Deva is important. If you people are enjoying it, I'm quite happy. My question is to Shahid. Can I take my question, Shahid? Ete, on your right. शायद हमने आपकी हैदर देखी और आज ये ट्रेलर देखा, दोनों में बहुत मजा आया. कुछ आप बता सकते हैं दोनों रोल्स के बारे में, कुछ क्या डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इट इज? सर हेयर कट सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है सर. बट शायद उसकी वजह से आपको थोड़ी सी याद आई. बट इसमें एक्चुअली 2 लुक्स हैं देवा की, जो एक थोड़ी सी बहुत सटली रोशन सर ने एडिट में डाली है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म में आता है तो ये हैज टू बी क्लीन शेवन. और दूसरी लुक है जो रगेड, रफ, किसी की नहीं सुनता टाइप, सनकी टाइप, जो पुलिस वाला गुंडा टाइप, व्हाटएवर यू वांट टू से, उस टाइप का एक लुक है. लेकिन लुक्स जो है वो तो सिर्फ इनिशियली आपको एक फील देने के लिए होता है. उसके आगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कहानी का मूवमेंट है, कैरेक्टर का टॉप लेयर होता है, लेकिन फिर सब टेक्स्ट होता है, थर्ड लेयर होता है. तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है. ये फिल्म की कहानी और इस बंदे का हेड स्पेस, ये दोनों कनेक्टेड है. ऐसे बहुत कम फिल्में होती हैं, जैसे डेविड फिंचर, शी सेड, आई थिंक रोशन ऑल्सो रियली एंजॉयज डेविड फिंचर्स वर्क. तो एक चीज़ होती है कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है, जिसमें परफॉर्मेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर, वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देवा, शायद हैदर में भी कुछ हद तक ये चीज़ थी, उसका जो मूड था, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. इसके अंदर आई थिंक देवा का जो इनर हेड स्पेस है और जो वर्ल्ड बिल्डिंग रोशन ने की है, वो हमेशा कनेक्टेड है. तो हमारी फिल्म में जो मौसम होगा या जिस तरीके की लाइटिंग होगी, जो अमित यहाँ पर हैं, जो हमारे साथ हैं, अमित रॉय, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित एंड केन, हु इज आल्सो हियर, द एंटायर टीम इज हियर. तो वो चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं. अगर आप फिल्म को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में सेकंड और थर्ड लेयर है. आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और प्रोमो में बड़ी आवाज़ हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में देखा. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं. तो मैं ये लिबर्टी लूँगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं, ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है कि इस फिल्म को देखने के बाद, एक तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है, दैट्स द रीजन आई डिड दिस फिल्म. मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट it's going to be very surprising. But ये उस कैटेगरी में आती है फिल्म जिसके बारे में आप देखने के बाद भी बात कर सकते हैं.
शायद सेकंड टाइम भी देखने का मन करेगा उसको पूरी तरह समझने के लिए. बट साइमल्टेनियसली बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, कहीं पे भी पेस स्लो नहीं होती है और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है फिल्म की और कैरेक्टर की हेड स्पेस की. तो फॉर मी दैट इज व्हाट देवा इज. इट इज द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड बाय रोशन and the thriller aspect which constantly keeps you wondering कि हो क्या रहा है. That's what it is. I think my whole मेरा पूरा जो खाना था सेट का वो sponsored by Shahid. Shahid has fed me around I think 10-15 दिन. He has got food for me. Yeah, सबको नहीं मिला. So Shahid used to get me a full dabba like a whole buffet. हाँ मेरे घर पे cook नहीं था उस दिन. 10 दिन के लिए. So Shahid was kind enough to get food for me, which was lovely. And मुझे नहीं पता मेरे contract में वो भी add हो गया है. So nicely done. But I think our romance on screen was fantastic because we got along very very well off screen. I met Shahid I think before we shot. 10 days before I think Diwali पे कहीं पर and I told Shahid कि I don't. Did you know that time I was beautiful? Shahid. But that's the time I told him that I've grown up, copying his dance steps, and I joined Shamak because Shahid was in Shamak. So always been a big fan of his. Always been a big fan of Roshan sir. And Siddharth sir, I just want to say you were the first person who called me after Thappad release. So that was the biggest thing that I could get a call from you. So I've worked with this wonderful group, and Shahid is literally the backbone of this. So thank you. Hello guys, hi Amar. There are very few trailers which make you wish that I can see the movie right after, and they were did that to me. I have two questions, one for Shahid and one for Siddharth. Shahid, when we spoke last time, you said that the vibe on the sets does not importantly decide how will the performance shape up. Like for a movie like Heather, it will be semi-serious. For a movie like Teri Baaton Mein, the vibe will be light. What was the vibe on the sets of Deva? And my question for Siddharth, you said that the film, the idea of the film came years ago, and I wanted to ask you, what was the vibe? What was the brief which Roshan sir came to you, and what did you tell him? Because it's his Bollywood debut, Hindi film debut. Well, I think it was about the story really. There was no brief other than him sort of like narrating the story of the film, and it blew us all away. It blew me away. It blew our team away. Malvika, Insia, all our whole team from Roycoat Films loved it and decided that we had to make it, and that's really where the journey began. So he didn't really have to give me much more of a brief than just saying what the story was. All right. The next one is from. Sorry, yeah. Why would the set was hard, bro? Hard. Hello, my question is to Pooja. We have seen different roles that you have been doing in recent years, and this one also looks completely different from the rest. So I was like, how is this, trying new roles and the versatility going for you? And secondly, as when he introduced you, you are known as a queen of crossovers. So what do you feel about that? Thank you so much. I just felt like I was at that point in my career where the roles I do now will define who I am as an actor, and I just wanted to take versatile roles like the other film of mine where I'm playing a very different characters compared to this. I think I think by that he means that I'm working in many languages. Also, I think it's a reflection of the films that I've done, and I've just always believed that to go wherever the content is good, and I've gone by my gut feeling. But my journey has always been it's not just been that one pan-India film. I think it's because I've worked in Telugu, I've worked in Tamil, I've worked in Hindi, and I've been loved and appreciated and accepted, which is a privilege, I feel. It's an honor, and it's truly humbling and makes me work harder. So thank you so much, and I don't know, maybe I'm a Mumbai girl who started my career in Tamil Nadu and got love and appreciation in Telugu, but I am from Karnataka originally, so maybe that helps too.
कुछ सालों में देखा गया है कि आमतौर पे बॉक्स ऑफिस नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि हिट फिल्मों की एक सर्टिफिकेट मानी जाती है बॉक्स ऑफिस को। आमतौर पे प्रोड्यूसर्स इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्या एज एन एक्टर आप भी कभी प्रेशर लिया है आपने, या एक्टर को भी लेना चाहिए? आप दोनों का कॉमन क्वेश्चन। I saw something beautiful the other day. It says that as actors, we should be allowed to fail. Okay, because only when we fail, we will be able to give you something new. Otherwise, we get into the pattern of following the trend and following what क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. So I concentrate on what can I bring new, and that's where I am at in my life, and I can only answer for myself. I think अगर हम देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, like you know, I don't know, like box office is very important for sure as a producer, and I hope that Sir Joy Kapoor is raking in all the money for this film. But at the same time, I feel like it's not a pressure that I should take, because as long as I do the job that has been commissioned to me right and fair enough, that pushes me more than box office numbers. और बहुत बार हम देखते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है पर बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पर 10 साल के बाद इट्स लाइक अ सुपर हिट फिल्म एंड वी आर लाइक, व्हाई डिडंट दिस फिल्म रियली वर्क at the box office? So as long as you make something that lasts for generations and people come back to you and say that was a really good film, that is what I strive for. तेरा सवाल क्या है कि मतलब पिक्चर पैसे बनाएगी उसका प्रेशर लो, मतलब क्या है? नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आमतौर पे प्रोड्यूसर का ये प्रेशर होता है, क्या सब पे होता है, प्रोड्यूसर पे का पैसा होता है, लेकिन प्रेशर सब पे होता है, you know, because nobody wants to be a part of an unsuccessful film. ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। और आप फिल्में ऑडियंस के लिए बनाते हो, ऑडियंस आएगी नहीं तो दिल तो टूटता है, you know, और बहुत बार टूटता है। और वही हमारा like she's saying, you know, we fail and we will fail. और कोशिश हमेशा ये होती है कि जितने लोगों को आप फिल्म दिखा सको आप दिखाओ, लेकिन हर फिल्म की कहानी अलग होती है, उसकी रेंज अलग होती है। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाओगे कि ये कितने लोग देख सकते हैं, तो आप एज अ क्रिएटिव पर्सन कभी कभी लिमिटेड हो जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो 100 मीटर की रेस भाग सकते हो, उसमें सिर्फ वही बनाओ भी जो चल रहा है, बनाओ। अगर आपको लंबी रेस भागनी है तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीजें करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हो ना, क्रिकेट में बड़े सारे नए प्लेयर्स आते हैं, आईपीएल में बहुत सारा अच्छा खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज के लिए प्रैक्टिस की है। फिर वो 2 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर वो टेस्ट मैच खेलना सीखते हैं, फिर वो 50 ओवर्स खेलना सीखते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में खेलना सीखते हैं। तो वो लॉन्ग जर्नी होती है फिल्म की, है ना। तो अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है कि आप 30, 35, 40 साल काम कर सकें, तो आपको अलग अलग तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। उसमें हिट्स भी होंगी, फ्लॉप्स भी होंगी, लेकिन आपकी जर्नी ग्रो करेगी। You know, but of course, every film we do, we wanted to do extremely well, and we do our best to do that. And Deva, from the beginning, we are saying is a film for the audience, for the masses. We made it to entertain you, but it's an intelligent film. हमारे डायरेक्टर मलयालम है। फिल्म अच्छी है बुरी है, बॉक्स ऑफिस से किस हद तक जज करना सही है? यार तू ही बता दे, हम तो यहाँ पे सबको खुश करने आए हैं बेटा, उसके आगे अब you know, we try our best to make everybody happy. Yeah, but the film should be for the audience. Thank you so much, Rahul. So my question to you is that we've seen Heather and we've seen Kamine, and both of you are coming out. You and Shahid are working together after a very long time. So how was the experience? I think the experience working with Shahid is always quite incredible because of the extent to which he gets involved in every project. I mean, the fact is that he gives his life to it. And from Heather to Kamine, I think this is the 6th film that we're working on together. But the intensity hasn't dipped at all, which I think is incredible across more than a 20-year career. So the fact that he's able to keep that level of intensity and involvement or passion for what he does, I think inspires everyone around him as well. And I think in Roshan, he met his match in terms of the level of intensity. So when he says it was a hard on-set experience, I think he really meant it. But he meant it, I think, finally in the best way possible, which is that hard experience sometimes leads to great results. देवा आ गया अगर आपके अंदर रियल लाइफ में, मेरे अंदर देवा आ गया रियल लाइफ बेटा, 1 साल आया हुआ ही था, भसड़ मचा में तो खुद आया हुआ था। ऐसे क्रिमिनल्स का आप क्या करेंगे जो आए दिन एक्टर्स पर अटैक करते हैं?
माइक देना चाहिए था यार पहले इसको नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न है. आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता. You know, because we hope that Saif's health is better and we hope that he's feeling better. और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ. इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्व करना मुंबई जैसे शहर में. यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है वहाँ पे. बहुत ही मुंबई सेफ शहर है. यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज हो, वो अगर रोड पर जाए तो बहुत सेफ रहता है. बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.